Hello, my dear students. How are you? I hope you must be enjoying. Let us discuss today's topic, and the topic is potential energy of an electric dipole in a uniform electric field. Suppose an electric dipole of dipole moment P vector is placed in a uniform electric field of strength capital E as shown in the figure. Now we know that whenever an electric dipole is placed in a uniform electric field, it experiences no net force but it experiences a torque. Therefore, if tau is the torque experienced by the given electric dipole in the electric field, then tau equal to P cross E. That is, the torque acting on the electric dipole is the cross product of dipole moment and the electric field. The magnitude of this torque is given by tau mod or simply tau without arrow equal to Pe sine theta, where theta is the angle between the direction of the electric field and the dipole moment of the given electric dipole. Now, the direction of this torque is in the clockwise direction, and therefore this torque tends to line up the electric dipole in the direction of the electric field. यानी कि ये जो टॉर्क लगा ये रोटेटरी मोशन पैदा करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा. इसलिए अगर हमने इसको रोटेट करना हो अगेंस्ट दिस टॉर्क तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा. सो नो लेट अस सपोज दैट द electric dipole is rotated through an angle d theta in the anti-clockwise direction, that is against the direction of the torque acting on it. Then some work will have to be done on it. If dw is the work done in rotating the electric dipole through a small angle d theta, then dw will be equal to tau into d theta. ये फार्मूला जो है जैसे लीनियर मोशन में what is work? Work is the product of force and linear displacement or linear distance traveled by the body. Now, whatever role is played by force in linear motion, same role is played by torque in rotational motion. तो जैसे वहाँ पे वर्क क्या है फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस, यहाँ पे फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टॉर्क है टॉ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा. सो देयरफॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ इनटू डी थीटा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ tau from equation 1 we get dw equal to Pe sine theta into d theta. So this is the amount of work done in rotating the electric dipole through a small angle d theta against the direction of the torque. And if capital W is the total work done in rotating the electric dipole in the given electric field from its orientation theta equal to theta 1 टू थीटा इक्वल टू थीटा 2, इसका मतलब कि पहले जो एक्सिस है डाइपोल की दैट मेक्स एन एंगल थीटा 1 विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने उसको रोटेट किया ताकि उसकी जो एक्सिस है इट मेक्स एन एंगल थीटा 2 विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. देन डब्ल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू, दैट इज capital W equal to integral dw and that is equal to integral limits from theta 1 to theta 2 and dw is Pe sine theta d theta. Now for a given electric dipole placed in a given electric field, given electric dipole means कि उसका dipole moment constant हो गया, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स उसकी स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब पी भी कांस्टेंट ई भी कांस्टेंट. और आपको पता है जब हम इंटेग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट्स को साइन ऑफ इंटेग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं. तो पी इंटू ई बाहर आ गया और इंटेग्रेशन आ गई साइन थीटा डी थीटा बिटवीन द लिमिट्स थीटा 1 एंड थीटा 2 और डब्ल्यू इक्वल टू पी ई. नाउ यू नो दैट इंटेग्रल साइन थीटा डी थीटा इज माइनस कॉस थीटा between the limits theta 1 to theta 2. Now this is further equal to minus PE, ये मैं नेगेटिव साइन बाहर ले आया माइनस PE और ब्रैकेट्स में बचा cos theta between the limits theta 1 to theta 2. Or you can say let us put the limits of theta or W equal to minus PE as it is
upper limit of theta is theta 2, so therefore we have cos theta 2. फिर आपको पता है हम नेगेटिव साइन डालते हैं, वो डाल दिया, और फिर लोअर लिमिट थीटा की पुट करेंगे विच इज इक्वल टू थीटा 1, तो यहाँ पे आ गया cos थीटा 1। और अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया, तो उससे क्या होगा, cos थीटा विल बिकम पॉजिटिव एंड cos थीटा 2 विल बिकम नेगेटिव, और W equal to PE into cos theta 1 minus cos theta 2. So this is the amount of work done in rotating the given electric dipole in the given electric field from the initial orientation theta equal to theta 1 to theta equal to theta 2. Now you know that electrostatic force is a conservative force, and in the case of conservative forces there is no loss of energy. और यहाँ पे हमें W वर्क करना पड़ा in rotating the electric dipole from the initial orientation to the final orientation, and work means energy. इसका मतलब हमें इतनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ी, and because in the case of conservative forces there is no loss of energy, so therefore this work done on the electric dipole in rotating it in the given electric field is stored in it in the form of its electric potential energy. So therefore if we denote this electric potential energy by capital U, then capital U equal to W equal to PE into cos theta 1 minus cos theta 2. So that is the expression for the potential energy of an electric dipole placed in a uniform electric field. Now we take special cases. Case 1, if theta 1 equal to 0 degree and theta 2 equal to 180 degree. Theta 1 equal to 0 means कि P vector इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और E वेक्टर में एंगल 0 डिग्री है, यानी कि इनिशियली E and P vector are in the same direction. That means the electric dipole moment has been placed in such a way that its electric dipole moment is in the direction of the electric field. और थीटा टू 180 का मतलब कि अब हमने उसको पूरी तरह रोटेट करके उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट कर दिया. Then putting these values of theta 1 and theta 2 in equation 4, we get U equal to W equal to PE into cos 0 because theta 1 is 0 minus cos 180 because theta 2 is 180, or U equal to W equal to PE. Cos 0 is 1 minus cos 180 is minus 1. Now this 1 minus minus will become plus, so it will be 2PE, or you can say that U equal to W equal to 2PE. अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in the direction of the electric field through an angle of 180 degree. अब जिस बच्चे को याद है कि वो वर्क डन आएगा 2PE के बराबर, अब कई बार तो वो P दे देगा, E दे देगा, तो आपने P और E को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इतने जूल आपका वर्क डन आ जाएगा. लेकिन अगर P नहीं दिया, उसने चार्जेस दिए हैं और लेंथ दी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो P की जगह हम लिख सकते हैं Q इंटू 2A. ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी आता है. सो रिमेंबर द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू 180 डिग्री with its initial position in the direction of the electric field is twice the product of the electric dipole moment and the strength of the electric field. Then we take case 2. If theta 1 equals 0 degree and theta 2 has any value theta, यानी कि शुरू में तो P वेक्टर और E वेक्टर सेम डायरेक्शन में है. अब मान लो मैं रोटेट करता हूँ ताकि उसकी एक्सेस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 30 डिग्री बनाए, 45 बनाए, 60 बनाए, कोई भी एंगल बनाए. इन जनरल हम मानते हैं कि वो एंगल है थीटा, दैट इज थीटा 2. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट कैपिटल U इक्वल टू W इक्वल टू PE. अब थीटा 1 0 है तो cos 0 आ गया, माइनस थीटा 2 इज थीटा तो cos थीटा आ गया, और U इक्वल टू W into PE into 1 because cos 0 is 1 minus cos theta, and that is the energy stored or the work done in an electric dipole when it is rotated through an angle theta
starting with its initial position which was parallel to the given electric field. Now case 3. If theta 1 equal to 90 degree and theta 2 equal to theta, that means initially the electric dipole was placed perpendicular to the direction of the given electric field, and now it has been rotated so that its axis or its electric dipole moment makes an angle theta with the direction of the given electric field. So therefore from equation we get u equal to pe. अब थीटा 1 है 90 तो आ गया cos 90 डिग्री माइनस आ जाएगा cos थीटा, and cos 90 you know is 0, तो equal to PE into 0 minus cos theta, or capital U equal to minus PE cos theta, and PE cos theta can be written as P dot E. That means capital U equal to minus P dot E. So therefore remember, the electric potential energy of an electric dipole in a uniform electric field is negative of the dot product of the electric dipole moment of the given electric dipole and the strength and the electric field. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पुराने बोर्ड के पेपर निकाल के देखें तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आम नज़र आएगा कि प्रूव दैट द electric potential energy of an electric dipole in a uniform electric field is given by U equal to minus P dot E. Now let us discuss 3 more cases. If theta equals 0, that means P vector and E vector are in the same direction. Then from equation 7 we get U equal to minus PE cos 0 degree equal to minus PE cos 0 is 1 equal to minus PE. Now this energy is minimum. अब एक बात याद रखनी है आपने हमेशा के लिए कि फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम इट्स एनर्जी शुड बी मिनिमम. अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कम से कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी जो होगी दैट विल बी मैक्सिमम. और यहाँ पे हमने देखा कि अगर पी वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो होगी मिनिमम, एंड देयरफॉर दिस पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉरस्पॉन्ड्स टू द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स व्हेन P vector and E vector are in the same direction, the given electric dipole is in stable equilibrium. Now second case is that if theta equal to 180 degree, then from equation 7 we get capital U equal to minus PE cos 180 degree. Now cos 180 is minus 1, so it will be equal to minus PE into minus 1. Minus minus will become plus, and therefore U equal to P into E, which is maximum. और जब किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी मैक्सिमम हो तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, एंड इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. देयरफॉर व्हेन एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 180 डिग्री, देन इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ द थर्ड केस इज that if theta equal to 90 degree, that means the electric dipole has been placed with its axis making an angle of 90 degree with the given electric field. Then from equation 7 we have capital U equal to minus PE cos 90 degree, and what is cos 90? 0, and therefore the potential energy of the given electric dipole in this position is 0. And this corresponds to a reference state of the electric dipole in the given electric field. So याद रखो जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि जब P वेक्टर और E वेक्टर में एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम कहते हैं कि इट इज़ द रेफरेंस स्टेट ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल. So that completes this. Now we come to a numerical problem. The problem is an electric dipole consists of two charges of plus minus 4 Nc. Nc means nanocoulomb. That means one charge is minus 4 nanocoulomb and the second charge is plus 4 nanocoulomb and has a length of 2 centimeter. This is the length of the given electric dipole, and you know that the length of an electric dipole is denoted by either 2L or 2A.
So therefore here 2A will be 8 centimeter. Find its electric potential energy if it is placed in a uniform electric field of intensity 5 into 10 raised to the power 10 Newton per coulomb with its axis making an angle of 60 degree with the given field. So let us solve this numerical. Here Q इक्वल टू प्लस माइनस 4 नैनो कूलम. अब SI में हमने चार्ज लेना कूलम में, सो नैनो मीन्स 10 रेज पर माइनस 9, तो इट इज प्लस माइनस 4 इंटू 10 रेज टू पर माइनस 9 कूलम. 2A द लेंथ ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे SI में मीटर में लेना है तो इट विल बी 8 इंटू 10 पर माइनस 2 मीटर. The strength of the electric field is E equal to 5 into 10 power 5 Newton per coulomb and theta equal to 60 degree. And our aim is to find the electric potential energy of the given electric dipole, that is capital U, and capital U equal to sign of interrogation. Now let us use the formula for capital U. Capital U equal to minus P dot E. Please remember this formula. U equal to minus P dot E, and minus P dot E is minus P E cos theta. Let us put the various values. We get capital U equal to, now P means Q into 2A, नेगेटिव साइन आ गया, P की जगह आ गया Q into 2A, E as it is आ गया, cos theta आ गया. Now let us put the values. Minus sign is there. Q is 4 because we have to take the magnitude of either force, charge, and the magnitude of either charge is 4 into 10 per minus 9 coulomb. तो यहाँ पे आ गया 4 into 10 per minus 9 into 2A, that is length, 8 into 10 per minus 2 meter, into E, that is 5 into 10 power 10 Newton per coulomb, into cos theta, and theta is 60 degree. Now this is further equal to, ये सारा करके मल्टीप्लाई आ जाएगा minus 160 into 10 raised to power minus 1, and cos 60 degree is 1 by 2, and therefore it is minus 8 joule. So that gives us the electric potential energy of the given electric dipole when it is placed with its axis making an angle of 60 degree with the given electric field. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.